Hello, Matu Jamir. I'm Yansa HornbillTV. Nagaland thagia book lovers kan karne ekta khushi khobor de aji literature festival aro book fair shuru hoise zone niatu by the park Chumukheti made HornbillTV pra program attend kriya khan ge aji kali manukan technology aro books puriya do kiniga balance krobo lage aro tai kanaga favorite writers kun ase etu hudishe abi details Hornbill TV aji yare Nietu Resort Literature Festival and Book Fair laga program de ahi gine ase. Itu festival hole to basically literature celebrate kura. Aro students kan ge literature la importance bi hekai tu ekla hole books kan hole bi kineka puriwo lage aro writers kan bi kineka khana se itu ekla hole naga writers kan nijor bi ahi gine yare book lovers kan ge bi kotha kuria laga bi festival ekta ase itu tai kan laga second edition ase first edition hole to jwa sal bi thagise moi kan yare Nietu Resort te aha nishna alag colleges schools pra hole bi dusra standards tai hi itu primary section de hole bi BA BSc level kan hole bi ahi gine aji laga program bi attend kuraise tai kan aji laga program attend kura nishna moi kan aji yare students kan teachers kan ge hudibo book puria do kiman important ase itu ekla nuli tai kan laga favorite writers bi kun ase naga writers kan bi kun ase aru aji kali technology bi ekta bishi fast pace te thagi janishna students kan kiniga technology aru reading books laga itu duita de balance kuo paru moi kan ta kan ge bi itia huda hudi kan bi kuri gine jawo. Who is your favorite naga writer? Eastern Curie. For me, like Eastern Curie and Rinchito Lims. What are the themes you are loving about the naga writers, be it poems or novels in general? Like the themes. Themes like mostly they focus on nature and then spirits. Okay, so you love that? Yeah. Okay. How about you? What are the kind of themes that the naga writers delve into that you are you love reading? Okay, so like as of me, Naga writers like they usually delves into themes of like of course they do about like love, romantic poems also, but for me, I really enjoy like something when they like write about our Naga history, folk like stories and all. Who is your favorite naga writer? And it's Eastern Curie. Do you read books more or touch your phones more? It was before I joined. It was before my first year college. I was actually so much involved in the reading books that I've read almost around 50 books during the lockdown. During the lockdown. Yeah. Okay. How about now? Are you being able to maintain a balance between touching your gadgets, mobile phones, and then reading books? No, it's not. It's not. Yeah. Okay. I'm focusing more on my gadget. I don't know why. You know? Who is your favorite naga writer? I like Eastern Curie. The writings are simple and very interesting. We keep reading a lot of naga writers, and there are many naga writers also who are coming up as well. What do you think we should do, or teachers also? What do you think you should be doing to encourage students to read more books, or involve more in books and writings rather than play touch their gadgets? Yeah. Actually, for reading, as a college students, we can't really force them to read books, right? Depends on them. But then, for me as a librarian, I used to encourage them to go for fictional books first for beginners and more of these naga authors because it's very simple, it's easier to understand. And I myself, as an occasional reader, I prefer our naga authors. Yeah, so I used to tell my students to go for this our naga authors first as a starter. And to get into reading, yeah. Do you read books often? If so, who is your favorite writer and what is your favorite book? I don't actually read that much, but I do like reading through my phone. Not Like books, webtoons but and yeah, I don't know. I just can't think of it at the moment. No problem. So basically, you prefer reading
webtoons or reading e-books rather than like books like this? Yes. So do you think that is a good or bad thing? Do you equally learn from both, or what do you say? I think it's not so good. Like if we read through book, I think it's more better. But I don't know. Like I don't have the habit of reading it through the book now. So I just read through online, I'd say. How important is it to read books, or be it e-books also? How important is it? To say like we learn stories also, and then like we can develop our pronunciation, not pronunciation, but we can develop our vocabulary and all, like learn new words, and just if we find some words which we can't understand, we can just go to the dictionary and search it, and then we can just make ourselves more knowledgeable, I'd say. Spirit Nights by Eastern Curie. I really love that. Hornbill TV is here right now with two of them from the organizing committee as well. We will get to know more about how today's youths are evolving with both technology and also reading books as well, and how they're balancing, or if at all actually youths are are even interested in reading books at all these days. Thank you so much for joining me. What is your name and your designation first? So my name is Deepthi, and I work as executive editor with Penguin Random House. Hi, my name is Pallavi. I also work with Penguin. I head their communications, and together we also are part of the organizing committee for the Penguin Presents White Hour Literature Festival. Ma'am, so could you tell us the importance of writers actually passing down folk tales, folklores through books? Because these days, especially even in Nagaland, also Nagaland is known to be one tribe that might be losing their language in some years to come, in some decades to come. How do you think it is? How important is it for writers to actually start inculcating this in their books and passing it down to the children? How can they do it? So this is an interesting question because we are both not from Nagaland, and I have an opposite view of this. Actually, I feel that Nagaland is very much steeped into its language, its culture, its heritage, whether it's women wearing their traditional outfits at even all kinds of events, whether it's an international event or an event like ours where they have representation from across the country. Or for that matter, if there are sessions that are being involving the local authors who are also talking about their legacy, their heritage, stories and events like this, they need to work with each other so that the world gets to know about the Northeast and the Northeast gets to know about the world. Nagas, like you said, we are all very peculiar in our own ways. We have a lot of tribes in all the 7 states as well. So how do you think, and books, topics and themes of books are versatile. It goes beyond, age and everything. So how do you think we Nagas can use books as our statement in any topic? Like a word for writers and even aspiring youths who wants to write? Look, I think already you've seen like a lot of the writers, you have so many well-respected writers who come from Nagaland. It's just to continue the tradition of that. Sorry, I don't know why I'm holding the mic. So I just think it's completely possible. You may not be able to earn a living from it, but writing is about much more. It's about, like you just mentioned, it's about passing down stories. It's about passing down folk tales. It's telling your own story as well. It could be absolutely contemporary. It could be your life as a journalist in Dimapur today. And that is also valuable. It doesn't have to be some ancient history. You should be open to writing your story and having an audience. The audience is there and it'll reach the right audience. तो itu thaise Hornbill TV aji are ahi kena literature festival aru book fair laga program laga attendees kan ge kotha koise itu eklai nohile bi organizers kan hoile bi tai khan itu books la upor ki babe itu eklai nohile naga manu laga itu peculiar tradition culture hoile bi kinega books kan de present kuribo lage itu kan la hoile bi huda hudi kuri kene jaise ahya din kan de ne update ani thaiwo reporter ke khresin ke ho camera person wong Hornbill TV chumkirima. Nagaland Forest Management Project itubar SKOCH Award 2024 paishim award ceremony do 100 Scotch Summit lua time day thagishe kundu Silver Oak Hall India Habitat Center Lodi Road New Delhi pra February 15 day lushe Nagaland Department of Environment Forest and Climate Change laga site pa ango Konyak DCF HQ aro Deputy Project Director
NFMP aro Wenye Konyak Resident Commissioner Nagaland House pra award to dushe. Sorkari khobor hisab te NFMP do DFCC Government of Nagaland pra Japan International Cooperation Agency laga assistance pra implement kriye aro project laga aim to forest ecosystem improve kurubule aro zoom areas kan rehabilitate kurigina income anibule madad dibule ase. Project to 2017 pra 2027 tak ase aro 185 bosti 11 districts aro 22 forest range te chuli ase. It is 79,096 hectares area cover kuriye. SKOCH award to country laga ekta sabse dangor independent award ase. Mon district bitore thagya walking area de 22 laga upor teachers kan ge transfer nohoile bi alag jaga de posting phatai digina taika laga place te arobi alag teacher na dia upor walking area students union pra khushi na pa junai dishe. Union kushi ke schools kan de teachers complete thagya homoy de notun appointment kuribule akha rakhi thagishe kintu uta teacher bishige transfer kurigina situation arobi biya kuri dia kushe. Education department laga itu face la the region laga students kan nimide bishi biya aro anja sase koigina union kushe. Walking area de age parahi teachers komti hoigina diktar thagishe edu nimide department ge itu face la arobi bhabna kuri dibi aro teachers kan laga replacement side dibi koigina mangishe. Union pa aro junaishe ki taikan teacher ekjon ge bi release na kurobo replacement na phataile aro WASU pra transfer hua teachers kan ge release order na lubi kushe reliever na phata tak agede Konyak Students Union pra Department of School Education ge past in ultimatum dia logo dibi khara kuri thagya walking area students union pra junai dishe. NSCNK Angmai laga group pra jasal November 25 de Assam laga Hati camp Namtola pra dukan kriya manu ekjon MD Muslik Ali kwagi durigina loija upor Konyak Union mon pra bishi disturb hoise koigina Ali ge 24 hours bitore eku condition narakhi gina chari dibi koigina demand krishe. KU kushi ke Konyak harassment manu laga majude shanti rishta thagigina bal neighbor thagyage kunuba unlawful activities kam pra disturb kuriya do endorse nohilibi support nadibo koishi aro itu hard earned mutual understanding aro respect thagya do kungebi biya korobule nadibo koishi. Union aro kushi ke kunuba manu laga khilaf ilzam thagya kandu kidnap kan kurigina tension ania nohigina thik kanun laga hisab pra sabule lage 24 hours saga bitore MD Muslik Ali ge chari dibi koigina inega nohile KU pra NSCNK Angmai laga group logode cooperate na kurobule declare kurobo lagi jabo koigina junai dishe. Saturday rati New Delhi railway station de stampede hoigina 18 manu muria pichide Monday din de tight security arrange hoise. Saturday laga khatna do 10 PM de hoise. Itya 1000 devotees kan special train board kurubule rush hoise. Kundu mahakumbh jabuli laga train thagishe. Idu khatna de Shiv Sena UBT spokesperson Anand Dubey pra comment kurise ke idu khatna do railway ministry aro central Sarkar officials kan laga negligence karne hoise koigina. Dubey pra center ge accuse kurise ki tai kan itu khatna do cover kurubule try kuri ase koigina aro state kurise ki itu khatna de kiman manu murise unsure ase kurise. Dubey demand kurise ki railway minister do resign kurubule lage koigina. Saturday laga khatna pichide northern railway pra charta nutun special trains kan introduce kurise. Passenger traffic to manage kurubule karne. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के गैर जिम्मेदाराना हरकत को कोई रोक नहीं पा रहा है। बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही रेलवे मंत्रालय ने कर दी, इतनी बड़ी लापरवाही केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कर दी। 18 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, कितने पता नहीं घायल हो गए, कोई सीमा नहीं है। भगदड़ इतनी बड़ी थी कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अब अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय, रेल मंत्री को इस्तीफा देने की बजाय अब उन लिपापोती में लगे हैं कि ये अफवाह तो नहीं था, किसी का षड्यंत्र तो नहीं था। अरे भाई, पूरी दुनिया के सामने दिखा है कि हर घंटे 150 टिकट आपने 1500 टिकट आपने बेचे हैं, तो वो भीड़ कहाँ जाएगी?
अगर हर घंटे 1500 लोगों को आप प्लेटफॉर्म पे भेज देंगे और 8 घंटे 10 घंटे तक ट्रेनें वहां से नहीं छूटेंगी तो भगदड़ जैसी स्थिति हो जाएगी। यही महाकुंभ में भी हुआ था। आज तक ये नहीं पता चला कि कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितने घायल है। आज भी बहुत सारी गाड़ियां लावारिस पड़ी हुई हैं महाकुंभ में। तो मतलब ये हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ ही क्यों होता है, सनातनियों के साथ ही क्यों होता है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई बहन तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, अपने ही महाकुंभ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और पहुंच भी जा रहे हैं तो स्टैम्प्ड में भगदड़ में मारे जा रहे हैं। और हम सवाल पूछें तो ये कह रहे हैं कि कहीं इसमें किसी की चाल तो नहीं है। तो इनको क्या लगता है कि विपक्ष ने वहां षड्यंत्र किया हुआ है? पकड़ लो, डाल दो हम सबको जेलों में, ठूस दो, फांसी पे लटका दो। लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। रेल मंत्री पूरी तरह असफल हैं, फेल हैं, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे नए सांसद चुनकर आए, उनको मौका देना चाहिए। Monday morning, Bihar Siwande 4.0 magnitude earthquake aishe. Koigina National Center for Seismology janaishe. Quake laga tremors kando 8:02 AM de aishe. Aur New Delhi de 4.0 Richter scale earthquake aishe. 5 km depth de. Delhi laga strong tremors kando 5:36 AM de aishe. Kundu laga sudden jolt pra residents kan thagya manukan panic de bahar olaishe. Delhi de edu tremor do ahia pichire Prime Minister Narendra Modi pra Delhi laga residents manukan ge panic na koribole koishe aro kam thagi gina safety protocols kan follow koribole junaishe. National Center for Seismology NCS laga director Dr. OP Mishra koishe ki Delhi do minor earthquakes kan experience kriya ase koigina aro etu quake do dola kon de aishe koishe. Director aro junaishe ki saal 2007 ne Delhi 4.7 magnitude earthquake aishe koigina aro aji morning laga 4.0 magnitude laga aftershock to 1.2 magnitude pra bhi komti thagiche koishe kundu natural ase koishe. दिल्ली में एपिसेंटर काफी सालों बाद दिल्ली था। इसके बारे में आपको क्या? काफी सालों में 2007 यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है और इसलिए इसे कोई नई इसमें कोई घबराने का नहीं है, ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो ये क्या प्लेट्स की कोलिजन थी? और नो कोई प्लेट का नहीं, प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है, कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं है, इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ। जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था, 4 पर टूट गया तो अच्छा है क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है, थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर शॉक? एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। तो सर हमने देखा कि सिवान बिहार में भी 8 बजे के करीब एक अर्थक्वेक आया। वो देखिए ये पूरी अर्थ जो है ना, ये अपनी प्रोसेस है, ये जहाँ पर जो है शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन तो होगा, इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ की रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ, यहाँ के रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, तो वहाँ स्ट्रेस एक्युमुलेशन का पैटर्न क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, इस पर डिपेंड करता है। दिल्ली में कुछ अभी रिस्क की संभावना? देखिए दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसे बोलना ठीक नहीं है, सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी से मैच न करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहाँ का जो है रेजिस्टेंट है, 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ, तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है? दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास्ट में अर्थक्वेक हुआ सेफ ही रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी हम लोग सेस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड दे रहे हैं, दिल्ली के लिए माइक्रोजेनेशन किया। अब जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं काफी अवरोधी बनते हैं, जो सेस्मिक वेव को अटेन्यूएट करता है। सर बस लास्ट एपिसेंटर दिल्ली में कौन से साल में रहा था? अब जस्ट ई में आपको 2021 में हुआ है, 22 में हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे हुआ। इतना करने मन ही साइटिक भी हॉर्नबिल टीवी।